हाय शिवेंद्र, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ठीक है यार, तो मतलब थोड़ा वेट कर लो, ठीक है? मतलब बच्चों तक इन्फॉर्मेशन गई नहीं थी। वी विल स्टार्ट द क्लास इन सम टाइम, ठीक है? मे बी 5-10 मिनट में स्टार्ट कर। स्नो एक और शाम का है। बाय दैट टाइम ना, आई एम मेकिंग यू द होस्ट, सो इफ देयर इज सम पीपल इन द वेटिंग रूम, काइंडली एक्सेप्ट देम आल्सो, ठीक है? ओके ओके। ठीक है जी, मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ। अभी आप मीटिंग रूम में अगर कोई आता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके। ठीक है। म्यूट कर लो यार, मनीषा म्यूट कर लो।
ठीक है guys, I guess people are joining and then leaving, so we will be waiting for more 2 to 3 minutes. ठीक है, till the time whoever will join, and after that we will start the class. Just wait for around 2 to 3 minutes. Okay. Okay, fine, fine. Hi, Shivendru. Are you Yes, here? sir. Yeah. Wait, wait. Just give me, guys. Just give me 1 minute. ठीक है. Shivendru, just make me host again. Okay, sir. Okay. क्या कह रहे हो?
This is happening. सर ये वो चेंज कैसे किया जाता है? देखो मेरा प्रोफाइल दिख रहा होगा आपको, पार्टिसिपेंट्स खोलो, पार्टिसिपेंट्स वाले पे क्लिक करो, मेरा प्रोफाइल हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। वहां पे मोर हाँ में जाओ, मोर, अच्छा yes, ओके ओके फाइन, मैंने कर लिया, मैंने खुद yes, कर दिया, भाई खुद कर दिया। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। okay. And then we will ठीक है, just tell me one thing कि how many of you were present in the yesterday's class, like yesterday? यार म्यूट कर लो। One guys I remember Shad was present in the class. Rest all of you. If you were not, just tell me honestly, because कि मैं फिर उसके according कुछ पढ़ा दूंगा। I was Shivendru. Shivendru, you was still, yes. Okay. Vishal Verma was not there. चलो ठीक है, 4-5 लोगों मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है। अभिषेक था, आई गेस अभिषेक आप थे ना। मनीषा आप नहीं थी, विशाल नहीं था, शाद और शिवेंद्र तो थे, ठीक है यार। तो मनीषा आप नहीं थी। ओके, पीपल आर ज्वाइनिंग। ठीक है। तो जी कुछ ऐसा करते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल हमने डिस्कस करा था, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोड हो गया था यार। पीपल आर ज्वाइनिंग, आई फील रूपा, ऋतुजा, रूपा, एंड हु एल्स ज्वाइन, आदर्श। आप लोग कल की क्लास में थे, कल रात की जो क्लास थी। नो, ठीक है। यार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको आता है, क्योंकि द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी डूइंग ऑन विल बी बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जस्ट टेल मी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर वो समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। डू यू नो कि ओके ऋतुजा नोस, व्हाट अबाउट अदर, मनीषा, आदर्श? ओके श्योर, आई विल डू दैट। Shad, you also don't know. We discussed this yesterday. Mm. Rupa, I was asking, do you know transpose in a transpose a matrix question? This question, do you know how to do that? Okay. ठीक है, guys. So there is a call that I have to take. Call means not some other call. So some of you I have taught it yesterday. Some of you exactly don't know. So certainly ki I'll not be explaining it once again the entire way. But one thing can be done. And interchanging rows and column will directly print the transpose. Yes, Adarsh, but that is the word of the. Do you know how to do? So can we do something like very quickly, like in just 5 minutes? I'll just explain the theory again because everything is written here. Just explain how it is going to do, and then we'll move forward to the other questions. If that's fine with everyone, just let me know if that's. I'm asking to this question to specifically to those who were present in the yesterday's class, because again you would feel ki sir you did the same question yesterday. Because see, after that now we have to do the one question that is ki rotate a matrix, matrix by 90 degree, but that will involve this transpose of matrix concept. So if someone doesn't know that, it will be hard for them to understand. Okay, fine, guys. So let's do one thing. I'll very quickly, in 5 minutes. Okay, I'll just show you the theory of all these things.
ठीक है जी. And maybe कल रात को हमने कोड नहीं किया था, ठीक है, isn't that Shad and Abhishek, and we'll just code it also, ठीक है. तो some empty work that was left for the yesterday will be completed here, and theory will also be completed. Okay, I hope everyone is happy. ठीक है जी. देखो, तो let's first understand the question कि what the transpose of a matrix exactly is. What do I mean when I say A transpose a matrix? So it is basically very similar कि once if you, this is your matrix, so maybe I'll do little zoom. Okay, this is your matrix. If you transpose it, ठीक है, see I have written here कि this is the transposed matrix. Okay, this is the transposed matrix. So if you can see, relate, if you can just use your visualization ability, so you'll see this is my first row. A, B, C, and D. A, B, C, D is my first row. It has become the first column, isn't it? A, B, C, D. This is my second row. Okay, E, F, G, H. This will become my second column, E, F, G, H. This is my third row. Okay, A, I, J, K, L. This is becomes my third column. Okay, I, J, K, L, I, J, K, L. This is my fourth row. Again, zero indexing is zero, but counting will be one. You don't count from zero. Okay, you don't count. You have zero chocolate, one chocolate. You count it from one. So I'm just counting the numbers M, N, O, and P. Okay, fine. M, N, O, and P are the fourth row. So M, N, O, and P has become the fourth column, isn't that? So this is my what. Okay, the what of the solution. Maybe. What of the question? Basically, what of the question was this. ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमें ये ट्रांसपोर्ट करना था. तो solution is कि we have to do this. So tell me just if you all are in the same page, if you have understood what of the question is and what of the solution is, what we exactly have to do. ठीक है, this will be basically this would be what of the question only, what of the solution. Just tell me if you have understood the question on the chat section so that I can move forward. And if you have not understood, then also you're free to ask. Okay, please don't feel shy or anything who will say, who will think what about me. The chats are private. No one is reading your chats. And again, I'm not going to judge you that is very sure. Okay, you all are my students and I never judge my students. Very good, Rupa, very good, Shad, very good, Adarsh. Yes, Adarsh, but there is what is simple and brute force means. Simple. Oh, okay, Rupa, I'll say you. Dekho, brute force, what it is mean, na? Ki there is the very basic approach. Okay, the first thing that is, there are two types of answers. Okay, the brute force. Brute force means the simple approach that doesn't involve any complications or complexities and all. It will involve very high time, or there will be some flaws in it, flaws in that, like the work will be done, okay, but it is not the efficient solution. Efficient solution means time is used less, no extra space is used. So the simple brute force approach that we will be first discussing is you take a new array. Okay, what you can do is take a new array or take a new I should write take a new matrix. Take a new matrix. Okay जी, ठीक है जी. तो देखो, वी विल टेक अ न्यू मैट्रिक्स. बहुत बढ़िया, मैट्रिक्स ले लेंगे. इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट आई विल ट्रिवर्स द फर्स्ट मैट्रिक्स रो बाय रो, सॉरी रो बाय रो, कि आई विल टेक द रो एंड देन आई विल insert it in the column wise. Okay, I'll insert it in the column wise. Ki here the column, the first row will become my first column. Okay, rows and columns transfer the traverse one matrix row by row and again key interchange. So this will involve these. Okay, but what are the flaws of this? Okay, Rupa, did you understood this approach? What the simple and brute force approach is? Just take a new separate array. Okay, take a new separate array. This is my initial array. This is a complete new array. This is a new matrix. I would say matrix would be a good word to use. Take a complete new matrix. Okay, ji. In that, just to how to say, yeah, just add. So, but see, the thing is, this is the new matrix, which is a transport version of it.
suppose कि what I'm saying is कि let's say this is the billboard, or maybe not billboard, the nameplate. Okay. It is the complexity is taking more time, and in general approach, right board for. Yes, exactly, Rupa. So see, the thing is कि अभी ना that solution is not complete yet, and how it is not complete yet, I'll show you. ठीक है जी. ठीक है जी, ठीक है. देखो, suppose that this is the your house nameplate. ठीक है, आपके घर का nameplate है this is, and here suppose this is my house nameplate. It is written Vikash Tiwari. ठीक है, that's my name. यार मैं अपना नाम भी गलत लिखता हूँ क्या? Okay. Now what I'm saying is कि now see कि I want to actually implement कि I want to write my name first, like the last name first and the first name after that. So what I did is कि I made a new billboard. There I wrote Tiwary Vikas. ठीक है जी. But this is a new billboard, or sorry, new nameplate. It is not the actual nameplate. मुझे ना इसके अंदर चेंज करना था. I just wanted to replace this. Okay, I just wanted to replace this. So the artist what did? Artist wrote it somewhere else. But now again you have to replace it, isn't it? Looking at this character, you have to replace now. You have to edit. Then your actual this will be changed. Yes, there was a call. So I have to delete this and recopy. Okay, recopy like this. Looking at this, Tiwary Vikash. Now, after doing this, only my actual nameplate will be changed. Okay, this was not my actual nameplate. This was just a copy that I created, a lookalike. Okay, so in the same case. Here, if this is a complete new matrix, so this is actually a transposed version of this, but I had to actually transpose this matrix. So now again I have to go and traverse in this matrix and copy each element one by one, each element here. Okay, then it will copy. So see, that's why I have written the complexity. First, the complexity will be extra O of n into m space. Okay, you have to, someone is asking, you'll store this in one array initially while computing. After that, you'll keep back the modified thing in the original array. Yes, Rupa, yes. That's exactly what I wanted to say. This is one of the approach, okay? One of the approach that is what the simple and the brute force. That means कि this approach this is something like ना कि हम कहते हैं ना कि किसी तरह से काम चलाने वाला approach कि anyhow my work will be done. But देखो, this approach, what it has flow. Again कि you should know कि what is wrong, what is right, what is better, what is the best. You should know all the things. ठीक है, जब तक आपको सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पता होगा कि सही क्या है गलत क्या है, तो how will you go to make the difference? Okay, how will you someone tell कि okay in the interview or anywhere in the life also when you'll be doing your this is not a good approach. Okay, see why it is not a good approach. Though it will do my work, but it will not do. It is not a good approach because first you have to take this extra memory that you have to take. Suppose now you have 50 GB of not 50 GB, 50 TB of data. Okay, suppose that 50 TB of data. Now you need to buy 50 TB of data again, isn't it? पहले आपको 50 TB of data तो खरीदना होगा ना. There you will store. Okay, there you will store. So first your space means money. For extra space you need extra money. So first though there will be take the extra space of O and n into m space, copying the transpose matrix. Okay, extra O of n1 into O of n into m time also. You know why? See, the first time complication, maybe here also I can write
ठीक है, देखो व्हाट आई कैन राइट इज नाउ कि इसको ना एक्स्ट्रा ओ ऑफ एन टाइम से पहला टाइम लगेगा, द फर्स्ट टाइम विल बी ओ ऑफ एन इंटू एम टाइम ऑब्जेक्ट, कितने किसके लिए, फर्स्ट creating the transpose in transpose, ठीक है, and in the first go someone has asked something, राउ सेशन का टाइम थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर दिया करें। हाँ ठीक है, अदर्स ऐसा करेंगे ना कि what I'll do is because see I was not added in your WhatsApp group and I had to inform this to the batch manager also and everyone. So what I'll be doing is ki now I am added in the group, so 1 hour prior I'll send you the notifications. Okay, the extra classes, but the extra classes that I'm taking, I'll inform you 1 hour prior to that. Don't worry about it. Okay. Today was the last day that you all were informed surprisingly, but from next time you will be informed 1 hour prior. Okay. Is that okay, Adarsh? Okay. Okay. Sure. ठीक है, तो let's see. Yes, the first thing is you have to transpose these metrics in this, so you will be creating a backup or something like that. But in this process you need time, isn't it? You need time for it. आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बिना टाइम का तो होगा नहीं। तो फर्स्ट यू नीड टाइम फॉर दिस, तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा, O of n into m। बट अगेन देखो, अगेन आपको ना ये वाले मैट्रिक्स से कॉपी करना है वापस से, देन यू विल टेक अगेन एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा O of n into m टाइम, and for this why it is for recopying, for copying back the all elements in the of copying back all elements in original array, original matrix। ठीक है जी, तो this will take my extra O of n time। what's the difference in O of n into m and O of n? अरे यार, O of n into m is कि देखो for n matrix से suppose कि you calculate it how much time it will take। okay, so suppose this is n rows, okay, and m matrix, okay, n rows and m matrix, ठीक है। तो n rows you have to travel n rows m times, isn't it? This is my rows, okay, this is my n rows, okay, this is my n rows, and you have to traverse these rows how many times, this columns time, this columns time, this columns every time. For this column also you have to traverse this row, for this column also you have to, suppose this is n row, no, one row, so you have to travel this row how many times, this column number of time, okay, the n rows m into time. But suppose you just had to do something like n plus m, there are two arrays, two just different arrays, okay, there are just two simple arrays, okay, this is of n length, this is of m length, okay। Now in this you have to make a array, you have to make a combined different array, so how much time you will need, you will need this much time and this much time, okay, this much time and this much time, so this will be n plus m, okay, this is n plus m, and n into m will be n times m, okay। Does that make sense to you, Rupa? Okay, fine. So see, now we have come to a conclusion that this will take my extra O of n into m time for copying back all the elements in the original array. Is that okay? So does that make sense ki why this is not a good approach? Because A, it will take my extra space, which will also cost me. B, suppose that ठीक है यार पैसा दे देते हैं, ठीक है, sometimes we say it is like maybe if I'm paying 5k for the right now I'm in Bhubaneswar, okay, right now I'm in Bhubaneswar and I have to travel to Delhi,
Okay, if I pay 5,000 rupees, so I'll go by flight. Okay, I'll go by flight, and that will I'll reach in Delhi by 2 hours. Okay, that makes sense to me. And if I take train, this will cost me maybe 2,000 to 2.5 thousand, but that will take me around 28 hours to reach. So this extra money is worth it. Okay, I can say if I'm paying this extra money, that is worth it. Okay, but now suppose my flight tickets are at right now at 1k rupees, or sometimes not 1k, 1900, the extreme odd seasons. Okay, 1900 is the lowest price that I have booked a ticket from Bhubaneswar to Delhi for some time. It will take me I'll reach in 2 hours. And if I book the ticket of Rajdhani, in Rajdhani, if you book ticket anytime, it is 2500. Ticket 2500 plus anytime. It is nearly 3000 all the time. So I'll take train, I'll pay extra money also, but for what? I'm paying extra money also, and I'm not saving time also. Because sometimes we take extra space, but if taking that extra spaces, because when you will study the higher data structures, when you'll study linked list, when you'll study stack, when you'll study queues, when you'll study DP and all, so then you will realize that sometimes taking extra space is good, because that saves a lot of time. Okay, but here मेरा पैसा भी जा रहा है और टाइम भी जा रहा है, तो that's not a good approach for sure. Okay, does that make sense to you all? एक बार chat में बता दो everyone, please tell me कि if we are on the same page, like you all have understood till this point, so we can go forward to the optimized version. What will be the optimized solution for this? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है जी. तो we will and read study the optimized version now. जैसे अनम्यूट वगैरह मत करो, आवाज आती है. If you want to really say something, you are always open, always welcome to unmute and say. But just if you don't have to say anything, please don't unmute your mic, because we are going in a flow, and the flow breaks simply. Just I get irritated, nothing else. If you want to say something, you are welcome to unmute yourself. I in fact prefer those who say unmute themselves and ask the question. Like yesterday, Sadhu was doing that in the class. I highly encourage that. But unless and until you don't have to ask anything, just don't unmute yourself. That will just, because your background noise will come, and it will create a hindrance in the class flow. ठीक है, चलो. तो ना अब एक चीज देखते हैं कि ये पहले से बनाया हुआ है. We will not take so much time. I'll do just one thing कि maybe कि मैं ये वाला मैट्रिक्स दोबारा से, बस ये वाली डायग्राम दोबारा से बना दूंगा. ठीक है जी. ठीक है ठीक है ठीक है, क्या फर्क पड़ता है. हाँ देखो, पहला था 0 1 2 3. ठीक है, देखो ये तो मैंने कल सबको प्रैक्टिकली करवाया था, आपको भी एक्चुअली में करना चाहिए, so that your visualization power will increase. But again कि we are repeating this question, so we will go in little fast pace. ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस में भी विजुअलाइज में आपको कराऊंगा. देखो एक्चुअली में मेरा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होने के बाद यही मैट्रिक्स बनना था ना. This was my matrix that I was forming after transposing this. ठीक है, I would write AF TAR after getting transposed. TIH getting transposed. ठीक है, after getting transposed, this is the matrix that is being formed. Okay, fine, very good, very good. So देखो, I'll do now one observation. I'll see this if I draw this boundary line. Okay, this please ignore. ठीक है, this boundary line. Then I can see the elements are swapped actually. Here B and E. Here's देखो B and E. Isn't it a swap, this element and this element? See here, this element and this element, this and this, I and C and I are actually swapped. In fact, this is also swapped. ठीक है, but अगर कोई एक जगह है, ठीक है, उसको खुद से स्वैप करोगे तो क्या होगा? It will be the same place. I can also say कि actually
it is just a smart observation ki reducing the workflow ki can ignore this, but this is also swapped, but this is swapped by itself, this is swapped by the origin. Okay, this is swapped across the origin, this is also swapped, this is then also swap. Okay, ये खुद से swap हुआ है, ये इसके बाद swap हुआ है. ठीक है जी, देखो C and G, ठीक है, here C and G, sorry, J and G are also swapped. ठीक है, D and M are also swapped. Here again, K is swapped with itself, the H and N are swapped. Then P is swapped by itself, O and P, O and L. ठीक है, so this is swapped. Okay, now my task was to visualize and draw a relation. Very fine word. If you all are taking notes, if in the go of the class, all try to note it down कि in these types of problem, this is a generic type. ठीक है, कई बार आपको problem में बस you have to change the diagram or change the representation. You don't have to change the data. You just have to rearrange that. ठीक है, whenever there is a problem of rearranging the data, always try to try to derive a relation. ठीक है, maybe I can write it here. Whenever our problem is with diagram, whenever diagram related to PIG, it problem, try to derive relation between, relation between initial, between INITIAL, initial and final state. क्या, and ना एक और चीज देखो, human eyes are very weak, trust me with this. ठीक है, you will do a lot of mistakes in that. I have been teaching for 2.5 years now. I have taught, not saying this with government or anything, I'm saying it with this with pride. I've taught maybe more than, I think, 5,000 to 6,000 students. 5,000 to 6,000 students को पढ़ा ही चुका हूँ, उससे ज्यादा ही होगा, maybe around 10K. I've lost the count. ठीक है, I've seen thousands of students doing same mistakes. So I'm just warning you for not doing the same mistake. ठीक है, mistake क्या होता है ना, कि आप लोग ये डायग्राम बनाते नहीं हो, कॉपी पे. You don't do, you just visualize in your mind. ठीक है, that is the mistake that I have also done when I was studying. ठीक है, maybe therefore I studied from YouTube and articles, blog, so there was no one to guide me. I am guiding you, please listen to my advice. ठीक है, कि don't believe in your eyes, don't believe in your muscle memories. For that, make the diagram. This will cost you how much? This will cost you maybe 30 seconds. ठीक है, but it will save you from a lot of mistakes. डायग्राम बनाओगे ना तो आपको ये दिखता है, अच्छा ये इधर से हुआ. दिमाग में बनाओगे तो ये सारे नंबर्स और ये सब चीज विजिबल्स नहीं होती हैं. ठीक है, उसके बाद देखो, ऐसे लिखा, मैंने कल ये काम करवाया था. एक्चुअली में देखो, लिखो कि कौन किससे स्वैप हो रहा है, देखो ये ना मैंने कल की क्लास में कराया था कि लिखो भाई कि कौन किससे स्वैप हो रहा है. आई, ठीक है, अब जरा देखो, अब आप लोग एक रिलेशन डिराइव कर सकते हो. अगर देखो, array of 0 and 1 is getting swapped with array of 1 and 0, array of 2 and 0 is getting swapped with array of 0 and 2, array of 3 and 0 is getting swapped with array of 0 and 3, array of 2 and 1 is getting swapped with array of 1 and 2. Isn't it? ये स्वैप हो रहा है आपस में, हाँ या नहीं? तो ये मैं देखता हूँ, ये आई है और जी ये जे है, तो अब ना मुझे यहाँ पे बहुत इजीली, बहुत एफर्टलेसली आई कैन जस्ट फाइंड कि दिस इज अ स्वैप, दिस इज अ स्वैप्ड वन. तो आई एंड जे आर गेटिंग स्वैप्ड हियर. दिस इज माय एक्चुअली फॉर द न्यूअर, मे बी ना इसको मैं थोड़ा सा अच्छा मुझे और तरीके से लिखना चाहिए, नॉट टू कंफ्यूज यू.
so that you don't get confused. ठीक है, this is actually IG, इसका नया IG यही है, ठीक है, ये तो इसका नया I है, नया J है, but I'm writing with the green color so that you can match it from here. But if I just see, this is the previous I, the new I is the previous J, the new I is the previous J. देखो 1001 1001 and my new J is my previous I, my new J is my previous I. See, 0232 0232. So I can reduce the relationship. It just swap I and J with swap J and I. Isn't that? If I'll do this, my work will be done. Isn't it? So just एकदम जल्दी से प्यार से बता दो कि if all of you have understood this till this point, if you all have understood, please let me know. Or if you have anything that you have not understood, you are facing problem with, you can ask that also. Very good, very good, very good. Only 3 people have replied, Vishal, Adarsh and Shad. What about others? देखो अगर नहीं समझ में आया तो पूछो. ठीक है जी, ठीक है. तो चलो देखो अब ना इसमें देयर इज स्टिल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एवरीवन, ओके आई गॉट इट. तो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल जस्ट कोड दिस टिल, ठीक है यार. कल वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, तो बस मैं यहाँ पे छोड़ दिया था, इट इवेंट टिल 1 PM, तो मैं यहाँ पे ही छोड़ दिया था. इसके अंदर भी एक फ्लॉप बचा हुआ है, वो हमने पहले गलती करेंगे एंड फर्स्ट वी विल डू द मिस्टेक एंड देन वी विल सी कि ओके दिस इज द मिस्टेक एंड देन वी विल जस्ट रेक्टिफाई. रेक्टिफाइंग विल टेक हार्डली 20 seconds. तो जस्ट विल डू दिस, ठीक है. Here we have matrix. इसको ऐसे नहीं लिखते, array of I replace with, नहीं 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 शायद नहीं. देखो ये डुअल मैट्रिक्स है ना, डबल मैट्रिक्स है, ठीक है जी. मे बी आप रो और कॉलम के बेसिस पे करोगे, बट देन यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू. उस वक्त आपको रो और कॉलम के बेसिस पे चलाना होगा, दो अलग अलग मैट्रिक्स लेकर के, सेम मैट्रिक्स में नहीं होगा. एरे वो जो आप लिख रहे हो ना शायद, दैट इज अ 1D एरे एंड दिस इज अ 2D एरे, ठीक है. दोज आर कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स. ट्रांसपोज TRA and TRA NS US transpose job. Scanner SCN equal new scanner system dot in. ठीक है जी. And then we will take the चलो अच्छी हैबिट है, मैं हर बार जानबूझ के 1 मिनट वेस्ट करता हूँ, so that you all make the habit. Take the C and row equal new SCN dot next, and ठीक है, and column. In yesterday's class also I told this thing, and today also I'll repeat. You all may be used to of, you all maybe have been used to of this, okay. And I or maybe and am, ठीक है. Don't use these things. They see there is nothing wrong about it. I have said it yesterday also. I'll repeat once again कि there is nothing wrong about it. It's just not very good looking. ठीक है. Looks matter. This is visual. This is more readable code. ठीक है. आपका खुद का कोड आप 10 दिन बाद नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है. अभी आप लोग नए नए हो ना, तो कुछ दिन बाद जब आप खुद के कोड दोबारा पढ़ोगे, you will find कि अच्छा मैंने क्यों लिखा था. But when you have reading putting it proper variable names and all, then that makes the code more readable, ठीक है. अब make a 2D matrix, make a matrix, make
matrix matrix int arr, ठीक है जी, इक्वल न्यू int रो एंड कॉलम, ठीक है। अब टेक इनपुट ऑफ द रो एंड कॉलम, टेक in take all the elements of a matrix as in, so type and put all the elements the ठीक है, that is very simple. You have to just apply two loops for int I equals 0, I is less than row I plus plus plus, for int j equals 0, j is less than column j plus plus, ठीक है, a array of I and j equal SCN dot next int, ठीक है जी। Now, ठीक है, what I'll do is I'll make a function for the transpose, ठीक है, functional programming is always good. Function 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 to TRANS POS transpose all transpose TRIX, ठीक है, PUB and public and static T take it void, this is void type, void a transpose in us transpose, this will be int arr, ठीक है। देखो अभी के लिए फिर ये वाला फंक्शन बंद कर देते हैं so that it will give good visibility. Now see what we'll do. You could have also passed the row and column here as a parameter and you can also take out. So this is a good practice कि आप आके यहाँ पे practice आपको एक बार row column निकालना भी आ जाएगा। row equal arr dot length and column equal arr और 0 dot length, ठीक है जी। अब देखो for int I equal 0, I is less than row I plus plus, ठीक है जी। for int j equal 0, j is less than column j plus plus, ठीक है जी। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा अपना, अब मेरे को आता हूँ सीधे स्वैप कर दो, SWAP स्वैप, हमें एक स्वैप का फंक्शन लिखना होगा, स्वैप array of I j with I didn't understand the column array dot 0 dot length, ठीक है रूपा, just give me 1 minute, I'll tell you how it is, ठीक है। yeah, just writing this code, after writing this code I'll like just explain you, ठीक है, else it will just break the flow. I hope that's okay with you. Okay, fine. Array, and then we will simply swap it with array of j and I. Very good. अब मेरे को क्या करना है, बस एक स्वैप का फंक्शन लिखना है कि जो एक मैट्रिक्स के अंदर दो एलिमेंट्स को जाकर के ये कर दे। दैट इज वेरी फाइन। आई विल जस्ट पब्लिक static void and public static void and then swap as swap swap. It will take two elements int array, एक array लेगा, ठीक है। स्वैप में आपने ARR और फाई और फाई लिखा है क्या? लाइन नंबर 29 में ARR और फाई, अच्छा, हाँ, और इसके अंदर ना एरे भी पास करना पड़ेगा क्योंकि इस एरे के अंदर, ठीक है।
देखो इसके अंदर एक एरे आएगा, एक इंट मान लो कि फर्स्ट, ठीक है, इंट, अच्छा फर्स्ट, ये नॉमेनक्लेचर गलत है, मान लो इंट ELE1 एलिमेंट 1 एंड इंट ELE2 फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। ओ नहीं 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 नहीं, मेरे को तो INJ चाहिए ना, इसके पोजीशंस भी तो चाहिए। एरे में पास करता हूँ, बेसिकली मैं I और J पास कर देता हूँ, सिंपल I एंड J, ठीक है। मैं इंडेक्सेस पास कर देता हूँ, I और J पे जाओ और इसको स्वैप कर दो। यहाँ पे मेरे को एरे चाहिए, यहाँ पे भी मैं I और J को ले लेता हूँ, एंड I एंड J। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से करना क्या है, स्वैप कैसे करते हैं। इंट एक टेम्प चाहिए होगा मेरे को, टेम्प इज एरे ऑफ I एंड J, ठीक है। अब एरे ऑफ I एंड J में मैं पुश कर दूंगा, क्या पुश कर दूंगा, एरे ऑफ J and I and then array of J and I में I will push it back 10, ठीक है। This will call me and you can maybe just write return, or even if you don't write return it will work fine, ठीक है। ठीक है यार, किसने पूछा था, किसने पूछा था, रूपा ने पूछा था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा आपको प्रीवियसली लेके जाना पड़ेगा, या छोड़ो इतना ज्यादा लग जाएगा आपको समझाने में। सर एक चीज पूछना था कि सर अगर हम हाँ फंक्शन हाँ को वॉइड डिफाइन कर रहे हैं तो रिटर्न हाँ उसमें हाँ लिखने का मतलब क्या है कुछ? नहीं है, मतलब ऐसे भी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न भी तो मैंने रिटर्न 0 ही तो लिखा था, अरे सॉरी रिटर्न तो सिर्फ लिखा था ना, रिटर्न ही तो लिखा था और कुछ तो लिखा नहीं था, रिटर्न में कुछ मैंने दिया नहीं था। ऐसा कुछ मतलब हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आफ्टर दैट इफ इट डजंट फाइंड एनीथिंग इट विल रिटर्न इटसेल्फ, ठीक है। C++ में शायद रिटर्न 0 मेन फंक्शन में लिखना पड़ता है, आई एम नॉट श्योर कि इसके न्यूअर वर्जन्स में शायद नहीं लिखना पड़ता है, बट yes, yes, प्रीवियस कुछ वर्जन्स में प्रीवियस कुछ वर्जन में लिखना पड़ता था, मतलब मैं 2 साल पहले C++ में कोडिंग करता था, उस वक्त तो लिखना पड़ता था। अभी शायद कुछ नए वर्जन आए हैं C++ के, वो नहीं आए हैं, उसमें नहीं लिखना पड़ता। अब देखो रूपा देखो, तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर कर दे देता हूँ कि वाई वेव, देखो रो क्या है, रो ये है, ठीक है, रो ये है, ये कॉलम है, ये बेसिकली क्या होता है पता है, ये बेसिकली पता क्या होता है एक्चुअली में। अगर आप ना, आप ये वाली लेक्चर, आपने मेरी पहली वाली एक लेक्चर देखी नहीं है, एक्चुअली में 2D एरे, okay, I think Rupa you are not comfortable with in Hindi, right? Okay, fine. I'll speak in English. That see the actually the arrays how it is created, how it is the arrays are created, na 2D arrays, how this is the array of arrays, fine, if you have learned this is the arrays of arrays, but what exactly is does it mean, ठीक है। it will take 2 minutes, everyone आपके लिए भी एक quick recap हो जाएगा। see देखो, in this there is an initial array, this is the initial array, okay, this is the initial array, here the arrays are stored, this is the arrays, this is my array, this is my array, this is my array, since it is a uniform array, so this is actually my row, ठीक है। इसको आप ऐसे ट्रांसपोज करके देख सकते हो, you can maybe look at in the transpose version, but here actually this is transpose, I would say ना कि कल की एक बार अगर आपको ये बात बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगी ना, तो just go and watch the yesterday's class which happened, the yesterday's extra class that happened at around 2:30 yesterday, the last 1 hour there I have clearly explained, I've shown the code also, everything. But for now understand this is an arrays of array, so the first array actually consists the addresses of a lot of array, so since this is uniform, this is my actually row, this is my first array, ठीक है, it contains arrays, so the column is actually this one, the column is this one, okay, so it is first array dot length, ठीक है। you could here take it any length, ठीक है, this was array of 0, you could have taken it array of n, but and that should be the between the length only, you can take 1 also, 2 also, and there I have also explained, that these need not necessarily, okay, this need not necessarily have to be fixed of length, because see the a 2D matrix can be of this also, this way also, but now since we have considered it that this is a uniform square matrix or the rectangular matrix, so all the size will be 0, so one of the size will be a column for, will work as column for me, ठीक है।
This is the length of the column. The length of the column will be this. The how many columns? This will be the length of the size, the length of the first array. Is that clear to you, Rupa? If it is not making sense, अगर कुछ भी थोड़ा if you have just understood an overview, I would highly recommend you just go and watch tomorrow's session. This is a 3 hours long session. Yesterday's session. Don't watch 3 hour long. It won't. You might get bored. Just go and watch the last 1 hour. Okay. In last watch 1 hour also, I guess in the first 25 or 30 minutes, I have explained all the concepts, how it is actually getting formed. Okay. Is that okay? Okay. So it just remember कि by अभी के लिए ऐसे याद कर लो कि array of 0 dot length say we get the columns, length of the column. Okay. Just and how it is actually getting, you just can go and watch the video because it will take me entire 35 minutes to explain. ठीक है जी. So let's go on the code. Okay, fine. So we will make a function for display so that we can see what our initial array was, what our this was. So pub a public static static void display. ठीक है जी. Here I'll just pass an array, a 2D matrix. There is something that I would highly recommend you all ki please don't skip classes, okay? Because I teach in a very different manner and I teach a lot of extra things also in the class. You all can like just ask for your friends also that I teach a lot of good tricks. Not tricks, it would be rather say bad to say the tricks. It would be some good style of working. So if you'll just miss the classes, in the next class, you will find, suppose right now, see how I am going to do row in ARR array. Okay. For this is for each loop int ELE in row. This way also you can just print your system dot out dot print not ln print ELE plus and after this loop just system dot out dot print ln. This is a way to display the 2D array. It will not require ELE and elements and all. Okay, it will not require that one. Just a very simple clean code. So first what I'll do after coming here, this is my main function. Okay, I took the input. First display the initial array, dis play display the let display large display function that modified I keep back the element large display function is that modified no Rupa, we are not actually, this is our optimized way. This is, we are coding this approach. We have not coded this approach. This we have not coded. Like this would be a whole lot of time, right? Discussing the same question. I've told you the approach. You can try coding. This is the simple approach. You just have to go and transpose the optimized version. See how I teach in the class is I tell multiple approaches of a question. How many approaches, which like all the best approaches that are possible. A brute force approach, that is the simple approach. Maybe sometime a more general approach and then the optimized approach, or sometime a brute force approach and an optimized approach. But certainly I cannot code all these things, okay? Because we have a limited time. Our sessions will end and you will learn only 1 or 2 questions in the session, entire session. So what we can do approaches, like if we can discuss the approaches and we can code the best one approach. Okay, that's what I do in the class. So this is the approach. This approach we are coding. ठीक है, देखो swap इसमें हमने किया था ना. So we are just swapping and transposing. So display the initial array. Display the initial array or initial matrix matrix that will be display int ARR. ठीक है. Maybe then I can just print a line system dot out print ln transpose the matrix URANS transpose the matrix and then that how it will be do transpose array.
Now display. Now DIS display the DIS transpose. Now display the transpose matrix. Very good. And DIS डिस्प्ले अरे ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया है। तो लेट्स ट्राई कोडिंग दिस ls ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक जावा सी can we do one thing, like it is taking input rather than taking input, because it will take a lot of time, and number equal 1, and I would just make it one number plus plus, ठीक है, it will automatically fill the 1 2 3 4 5 6 7 8 okay, 9 10 11 12 13 14 15 16 17. I hope that's okay with everyone. Okay, rather I would have to write put a lot of input there. Java C transpose of a matrix, Java transpose of a matrix C 5 and 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 array enter bound for array length. ट्रांसपोज लाइन 43 कहीं पे मैंने कुछ गलत किया है क्या? array dot length प्लस प्लस कहाँ पे? यार क्या बोले, मेरे को सुनाई नहीं दिया बिल्कुल भी। सर लाइन नंबर 37 फॉर इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन। अच्छा 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 अच्छा, ये एक छोटी सी गलती होगी। दिस इज समथिंग दैट हैपन, दैट कीप हैपनिंग इन योर लाइफ। जावा सी matrix dot java ओके 5 5। यार ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब ये तो ट्रांसपोज हुआ ही नहीं। मैं तो, हमने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा, जो हमने लिखा वो गलत लिखा। Isn't that the initial matrix and the final matrix are the same? देखो मैंने ट्रांसपोज करने से पहले मैट्रिक्स को प्रिंट किया, ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, इट इज सेम। तो हमने कोड गलत लिख दिया। क्या इतने 1 घंटे की मेहनत बर्बाद? देखो अभी हम गलती कहाँ किए हैं, ध्यान से देखो। we are actually traversing in the entire matrix, ठीक है। तो what we are doing is here first we are swapping this with I and j, ठीक है। let's do one thing, we'll do a demo for small one, copy, and that will make you understand the whole thing। ठीक है जी। तो ना मैं अभी के लिए ये लाइन वाइन मिटा दे रहा हूँ। चलो ठीक है, ए और ए में स्वैप किया, ठीक है। देन वी केम हियर एट बी बिकॉज वी विल बी ट्रेवर्सिंग दिस वे, इजंट इट? वी विल बी ट्रेवर्सिंग दिस वे, तो वी केम हियर एट बी 1 and 0, दिस इज 0 and 1, हियर माई आई एंड जे, ठीक है। आई वुड राइटिंग हियर आई इज 0, जे इज 1, तो वी स्वैप्ड इट विथ whom? We swapped it with 1 and 0, ठीक है। मेरा नया आई and naya j will be 0 and the swapper, I will write swappers, 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 ठीक है। the swappers would be 0 and I, ठीक है। this is, तो we got swapped here, ठीक है। मैं swap को वापस से इस तरह से लिखता हूँ, सॉरी, E and B,
ठीक है जी, we came at C, ठीक है, C for this it was 2 and 0, it will be swapped with 0 and 2, ठीक है जी, 2 and 0, तो 0 and 2 is here, this will get swapped, this will get swapped, okay, क्या होगा, मैं भूल गया, I and C are swapped, I and C, here it will be I, here it will be C, ठीक है जी, then come D वाला part, ठीक है, then come D वाला part, so here my 0 and I is 0 and swappers are 3, isn't it? This will be also ये मैंने गलत लिखा, ये मैंने गलत लिखा, my initial was 0 and 2, 0 and 2, the swappers will become ये मैं क्या लिख रहा हूँ, swapper will become, swapper किससे होगा, ये I will become my 1 and G 0, this will become 2 and 0, yes, Rupa. This will become my, now swapper will become 3, 0 and 3, so it will become 3 and 0, so 3 and 0, ठीक है, it will swap, ठीक है जी, इसको भी swap कर देते हैं, फिर मैं भूल गया क्या था, M and D, this will become M and D, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अब ना दोबारा इस रूट पे आते हैं, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जस्ट लुक वेरी केयरफुली, नाउ माय अगेन नंबर इज I and J, नया मेरा जो स्वैपर है, एक मिनट के लिए मैं इसको दोबारा या दूसरा लिख लेता हूँ, I and J फॉर दिस रो 0 फॉर रो 1, दिस इज माई I and J and the swappers, these are my SWA PPERS swappers, ठीक है जी, इसमें भी I और J, अब देखो यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये काम सेम होगा, ठीक है, यहाँ पर ये, और इसमें ना मैंने 0 0 वाला पार्ट इग्नोर कर दिया था, 0 0 will be also swapped with 0 and 0, इसके अंदर भी 0 0 से वो खुद से स्वैप हो जा रहा है, देख रहे हो आई और जब सेम रह रहा है, तो अब देखो 1 and 0, वेरी केयरफुली सी हियर, 1 and 0, दिस इज माय फर्स्ट नंबर, I is 1 and J is, this is I, right, sorry, this is I, this is J, isn't it? I and J are 1 and 0, it will be swapped with 0 and 1, if it got swapped, this will be B, A, B, C, D, A, B, C, D, and this will become E. Voila. There we were doing mistake. Isn't it? अब गलती कर दिया, दोबारा से वापस आके स्वैप कर दिया, वही सेम काम यहाँ पे मैं आकर के, इसको तो मैं पहली बार स्वैप करूंगा, जब दूसरी बार आऊंगा तो here again I will, when I'll come that I'll again re-swap it. So can you all see where we did the mistake? What about others? नहीं समझ में आया क्या? शाद नहीं समझ में आया आपको, बताएं कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, शाद अनम्यूट करके बताएं। सर 2 बार क्यों हम लोग स्वैप कर रहे हैं? नहीं करना है ना, ये तो गलती हुआ, देखो ये गलती में दिखाया, हमने गलती कहाँ की, मैंने ये दिखाया, देखो ये मेरा इनिशियल एरे था, ये मेरा फाइनल ट्रांसपोज करने के बाद ये बन जा रहा है, तो ये गलत बना ना, ये तो मेरे को आंसर ऐसा चाहिए नहीं था, मेरे को तो आंसर जी कुछ और चाहिए था ना, इसको ट्रांसपोज हुआ चाहिए, पर ये गलती हुआ हमसे, ये गलती कहाँ पर हुआ, ये गलती यहाँ पर हो गया हमसे, हम आकर के जो हमने कोड लिखा, जो हमने कोड क्या कहा था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि देखो यार इसको एरे ऑफ, पूरे एरे में ट्रेवर्स करो और एरे ऑफ आई और जे को एरे ऑफ जे और आई से स्वैप कर दो, isn't that we were that we told you? यस सर। Yes. Rupa, yes, you are right, but like that's a good observation, but maybe you cannot derive a relation from that. See, अब हमें रिलेशन देखना होगा, तो बेसिकली हमें क्या करना है, देखो हमें अपर ट्रायंगल में ही ट्रेवर्स करना होगा, अगर लोअर ट्रायंगल में करेंगे तो देन इट विल बी अगेन रिवर्स, ठीक है, फॉर दैट हाउ कैन वी स्टॉप, there are 2-3 ways to do that. A will be कि whenever j is greater than I, ठीक है, देखो जब j i से बड़ा हो तभी स्वैप करो, here I is greater than j, तो एक चेक लगा सकते हो, swap, that will stop. I'll show you 2-3 ways only, ठीक है, if j is greater than I,
ठीक है, then swap, ठीक है. This will also this will solve your work. Java C boolean, अरे यार मैंने क्या लिखा था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स डॉट जावा C, sorry, Java transpose matrix 5. See, now the thing is transposed. First row 1 2 3 4 5, it has become the first column 1 2 3 4 5. Second row 6 7 8 9 10, this has become my second column 6 7 8 9 10. Third row, this has 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15. Fourth row 16 17 18 19 20, 16 17 18 19 20. ठीक है, this is one of the way you can just keep a check of that. ठीक है, but this can be further modified, you know, because what that will be it will just keep on, it will visit on every row. ठीक है, it will visit on every row. We can save half of our time, we can still save our half of our time. You know how? You just, we need to do on this upper triangle na. So every time start with j equal 1 I plus 1. Start j from here na. Start column from here, because you don't need to do the first one also. When you are in the first row, you need to transpose this first element, isn't it? When you are in the second row, you need to transpose this element only. When you are in the fourth row, you need to transpose this element, because this will get transposed with this one, this will get transposed with this one, this will get transposed with this one, this will get exchanged with this one, this will get exchanged with this one. So there is another way we can do that. This is one of the way. Okay, I would just put a comma on that, one of the way, but it will still still travel travel the entire matrix. Now you can just say here, I will start from I plus 1. Okay, in even triangle. Yes, Rupa, very good, nice, very nice observation. Now this will save half of the time, as it will only travel half of the matrix. ठीक है, अब देखो, अब ये वाला चेक मैं लगाना बंद कर देता हूँ. ठीक है, this check I will not use, and still my work will be done. Java C transpose of matrix dot Java transpose of matrix 5 1 2 3 4 5 1 2, हाँ देखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25. But I joined a little late, so can you please explain how the functions are working, because I'm facing problem in it. Kunal, can you do one thing? Just can you unmute yourself and tell me exactly where you're facing the problem, and I would revise, I would put a highlight on that part. Yes sir. सर जैसे अपन ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड बनाते सेकंड फंक्शन, हाँ, उसमें से अपन कौन सा ट्रांसपोज? हाँ यस सर, इंट ARR जो अपन यूज करते हैं, तो अपन उसको जब ये कॉल करते नीचे तो उसको कैसे क्या इन्हें वो होता है, इन्हें वर्क करता है वो. ठीक है, देखो ये ना, आपको ये पता है कि एरे कैसे पास होता है? एरे पास कैसे रेफरेंस से, मतलब एरे का ना ये एड्रेस ये जो एरे है ना, ये एड्रेस पास करता है अपने आप में. देखो चलो देखो, मैं ना आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, demo.java. यार मतलब ये ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, जितना शॉर्ट टाइम में हो सकता है बता देता हूँ. देखो ये एक एरे बना हुआ है, ठीक है, दिस इज अ एरे, ये हीप पे कहीं बनता है. ठीक है, हीप पे कहीं बनता है, ये 4K एड्रेस में मान लो बनता है, देयर इज अ 4K एड्रेस ऑफ दैट. ठीक है, now when you pass in the sum in the array na, when you pass in the array the function, when you pass address, you actually pass 4K. ठीक है, in the real life it would take time for me, but
मे बी यू कैन डू वन थिंग कि क्लास के बाद थोड़ा सा रुक जाना 10 मिनट के लिए, उस टाइम पे मैं आपको इसको कोड करके भी दिखा दूंगा कि कैसे होता है, बट अभी के लिए बस ऐसे थ्योरी बता देता हूँ बिकॉज इट विल हिंडर अदर्स टाइम्स ऑल्सो। तो अभी देखो ये ना एरे एज अ 4K स्टोर कर रहा होता है, 4K स्टोर कर रहा होता है, इसका बस एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। तो आप जब कहीं पास करते हो ना फंक्शन में, तो आप एक्चुअली एरे का एड्रेस पास कर रहे होते हो, 4K पास कर रहे होते हो। जैसे कि आप इस एरे में यहाँ से जब आप फंक्शन को पास किए, ठीक है, ये देखो स्ट्रैप फंक्शन में पास किए, इसमें ना आपने 4K पास किया है। अब ये जा करके दूसरा बंदा जो होगा ना, जैसे ऐसे समझो कि मान लो आपके पास एक आपको ना फॉर एग्जांपल आप हो, मैं हूं, और यहाँ पे शाद है, ठीक है, दिस इज यू, दिस इज मी, दिस इज साद, ठीक है, यू नो साद्स एड्रेस, ठीक है, यू नो साद्स एड्रेस। अभी मैं आपके पास आया ना, तो आपने मेरे को साद का एड्रेस बता दिया, ठीक है, आपने तो शाद का घर आप मेरे पास लेके नहीं आए हो, बस आपने मेरे को एड्रेस बता दिया। अब मैं खुद से साद का घर ढूंढ लूंगा कहाँ पर होगा, और वहां पे जाकर के काम कर दूंगा, ठीक है। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस सर। ठीक है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा क्लास के बाद रुक जाना, मैं बता दूंगा, ठीक है, कोड करके दिखा दूंगा कि ये एड्रेस की पासिंग कैसे होती है। बट अभी अगर करूंगा तो फिर क्लास का टाइम जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ठीक है यार, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ठीक है यार। एक वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द चैट्स आर प्राइवेट, सो नो वन इज गोइंग टू रीड योर चैट्स, whatever you are saying. Just I want a short feedback from your side. Ki it's been 4 5 days or like a week you all have been studying with me. So just let me know if you all are facing any difficulties, or you feel ki there is something that okay, Rupa, I'll explain you that also. First, just let me complete what I was saying. Ki I just want to know from your side if you all are facing any types of difficulties with my teaching pattern, or anything that you're not comfortable. Please let me know, so that I'll keep note of that. Or if you all are comfortable, then you can just let me know that also. One thing that I feel is ki, maybe speed, if you will be feeling a little bit, because we are doing one question with more than an hour. So if any types of because the class, you all are attending classes after giving you a lot of your time and energy, so I need also to make sure that okay, everything is going fine or not. It cannot go one directional. Okay, fine, Kunal. Maybe you can tell me after 2 3 classes. Others, please just let me know. Just be honest, okay? Be honest. If you have not understood, if you're not feeling comfortable, if there is something that is a facing problem, you can let me know that also, okay? Don't feel that I will judge you or anything else that. I've received only 2 replies. Okay, ठीक है. I understand maybe you would not want to share your name, so I'm just making an anonymous form. Here you don't have to write your name or anything. You can just let me know. That's a very simple form description. Okay. ठीक है।
Sir, there's a bit confusion. Can I ask? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ. Yes, please go ahead. Yes, sir. When we were taking an if condition, that Hmm. if only j greater than I, then Hmm. swap. If we Hmm. don't do that, entire array remains the same, matrix remains the same. Can Hmm. you please write on, sir, so I could visualize? Sure, sure, sure. I am resending the form. See, देखो, what I was saying कि if we were doing the I and J, तो देखो swap अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर J मेरा बड़ा है I से, isn't it? I is greater than J. Here Yes, sir. J is greater than I. So I am swapping in the upper half triangle, but I am visiting here. So I am just saying if I am visiting the lower half of the triangle, I will not do the swap. This is here in the lower half. In the lower half, just see J and I and J. So here I is greater than J. Here I is greater than J. Here I is 2 and here J is 1. Here I is greater than J. Some of you have asked before exam date. Yes, Abhishek, I'll try my best. And आपके एग्जाम्स कितने तारीख से हैं? 27th best. हाँ 27 से है ना, तो कंप्लीट हो जाएगा आदर्श. विल बी डूइंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर श्योर, हैव फेथ ऑन मी. कंप्लीट हो जाएगा. सी देखो क्या होता है, जैसे कि आप पहले की क्लासेस में आए हुए होगे हो, तो these are the very initial classes that you all are going to have with me. So in the first things what I do is like I try to make a base, okay, because you have to spend around 4 months with me, isn't that? So in the next 4 months, first in the initial time, I'm just trying to make a good base of yours, so that after when we will do the higher problems, no, like see, कल मैंने start करने पे, अच्छा रूपा, I have taken a note, but I'll do that in the last. कि display function ये कैसे print कराया? ठीक है, this is a nice way. Yesterday we spent around 10 to 15 minutes understanding that. Now every time I'll be using it, and for sure every time I'm not going to explain how this for each loop is working. This is a for each loop, Rupa, and I'll explain you the concept of for each loop in the last of the class. Okay, so that's what I was trying to make. But okay, fine. Still noted. Whatever the feedbacks that you all have give, I'll take a really consideration of that. So I just want to improve, make sure we all are getting benefited from the class. This class, the time that you all are putting in is very important. You all can just go and solve the questions also. So it should benefit you and everyone, not only single one. That's why I took feedback from you all. Whatever there will be the things that necessary changes will be certainly be done. Don't worry about it. One guy, Abish, others, I have taken note of your whatever you have said. I absolutely agree with you. कि ठीक है, this is something that can be taken note of. ठीक है, तो take a notes of this class. Take the note of this is the actual transpose function. ठीक है, for 2 minutes break. I'm also continuously speaking for the 1 hour. So after 2 minutes we'll start. Maybe 2 to 3 minutes. Then we will start. Okay. Do the next questions.
Okay, guys. So let's move to our next question. That would be first. I guess I need to share it again. बचो ना बचो 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 ठीक है यार. Let me share. Then we have the new question, all matrix sum. ठीक है. ठीक है. This will take us hardly, I think, 5 to 10 minutes. This question. Maybe I'll just take the screenshot of this. And take you all here. All matrix sums. The question name is and guys, only I have received 2 responses in the form. That's anonymous. That's anonymous. Like your names are not getting recorded there. So you can just feel free to write your feedback and reviews. Just I'm trying to figure out if there is something that I need to work on. Like you all are not comfortable or anything. So be honest, that will be benefited to you only. Matrix sum. ठीक है जी. So let's take the question here input. So, you are given a chessboard of size n into n, where the top left square is the black and each square contains a value. Find the sum of the value of all black square and all white square. Remember that in chessboard, black and white squares are alternative. User input, input user task input consists of n and the number in n into n matrix. You need to print the sum of the black square and then sum of the black square, white square in the 9. Okay. So what I'll do is I'll just go here quickly and take a picture of chessboard on my screen, like the notebook. CHESSB board image. The white. ठीक है जी. They are saying the black is on the left. Black is on the. चलो यार इसी को resize कर लूंगा किसी तरह तो कर ही लूंगा. Let me take this box. ठीक है. And they have said कि remember the chessboard black and white square, you where the top left square bracket
square is black. So okay, I can do just this thing, resize, you know, now the top left is square. ठीक है, this is the required bracket. So first let me write the indexes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है जी. And the thing is कि हाँ, इस पे लिखा हुआ दिख रहा है. ठीक है, तो there are numbers written here. So maybe अभी initially ना मैं ऐसे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ज़्यादा जा रहा है क्या? हाँ, 56, ठीक है. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. हाँ ठीक है 8 क्रॉस 8 का मैं 7 क्रॉस 7 कर ये दिस इज 8 क्रॉस 6. ठीक है, तो देखो you have got a very simple, the question is very simple. Again we will keep the flow, our same flow. If what of question flow would be flow be simple. What of question what of solution and then what of sorry then how. ठीक है, how करेंगे कि solution कैसे है, क्या है, और फिर solution कैसे बनना है. ठीक है, आ जाओ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. Let's first understand what the question is. The question is, we are discussing right now what the question is. ठीक है, the question is you will be getting a chessboard. ठीक है, this is the chessboard that you have got, and insert in that is for sure. You all know that in chessboards there are white boxes, so there are some black boxes, there are some white boxes, and these are alternate. Okay, the alternate in the question that has made very sure that the first top bracket, the first left corner one is the black. ठीक है, it could have been white. अगर मैं इसको reverse कर देता तो white हो जाता, but still it is made sure that the top left black square top left square is black. ठीक है, now you have to, and these will be the numbers, these have the values that they have. So someone have different, someone have different. I don't know which one I have right now. ठीक है, अब देखो what we have to do is we have to calculate the sum of all black boxes. ठीक है जी, बहुत सिंपल सा, the sum of all black boxes बस ये रहे मेरे सारे ब्लैक बॉक्सेस. इनके सम क्रिएट अलग से सेपरेटली वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल वाइट बॉक्सेस. this 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 this. ठीक है, ये सारे अलग अलग से ये हो गया. बहुत बढ़िया शायद, अच्छा लगा.
देख पढ़ के, बट ठीक है, सबके लिए तो करना पड़ेगा ही। तो कैन एनीवन टेल मी कि हाउ वी कैन डू दिस? इसका अब कोई ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल इस तरह से है नहीं, देयर इज जस्ट वन अप्रोच दैट वी हैव टू डू इट। हाँ ठीक है, चलो अभी ना देखो, दैट वुड बी की प्रॉब्लम को ना सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। व्हाट ऑफ द क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, वी आर क्लियर विथ व्हाट ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ लेट्स कम टू व्हाट ऑफ द सॉल्यूशन। जस्ट गिव मी गाइस, गिव मी 30 सेकंड, आई जस्ट वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। यस यस यस, जी साद साद, आपकी अप्रोच में थोड़ी सी गड़बड़ है। वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आदर्श। वेरी गुड कुणाल। आदर्श एंड कुणाल हैज रिटन द आंसर वेरी परफेक्टली। शायद आपके आंसर में ना थोड़ा सा गलती है, अभी हम बता देते हैं कैसे क्या गलती है। देखो, see what would be the I would break the solution in two parts, ठीक है। कि फर्स्ट हमें क्या करना, क्या होगा, we have to traverse in the matrix, ठीक है, हमें हर बार ट्रेवर्स करना होगा, ठीक है। एंड मे बी आई वुड से कि I'll keep here count, ठीक है, white box, ओके, एंड ब्लैक बॉक्स, ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है जी। अगर मान लो इनिशियली इफ आई जस्ट कीप इट जीरो, आई विल कीप दिस जीरो, ठीक है, आई विल कीप व्हाइट बॉक्स जीरो, आई विल कीप ब्लैक बॉक्स जीरो, वेरी गुड। then what I'll do is I'll just traverse in the matrix, and if I can somehow, if think about it, okay, if I can somehow figure out if whether this is a black box or this is a white box, then my task become very easy. I just have to go and add it in here in the sum, isn't it? बहुत आसान नहीं हो गया? If I just can figure out anyhow, suppose I was traveling in the entire matrix and came across this element, ठीक है। If now I can figure out if this is a black element, sorry, if this is a black box or this is a white box, if I can do this anyhow, then I can simply add in if it is black box, I would simply plus here. If it is a white box, I would simply plus here. Isn't that very obvious? अरे यस और नो बता दो। देखो अभी हमने ना व्हाट ऑफ सोल्यूशन करा है, ठीक है, व्हाट ऑफ सोल्यूशन कि वी हैव टू फिगर आउट हाउ, हम कैसे फिगर आउट करेंगे, हाउ दैट विल बी डूइंग राइट नाउ। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो जरा ना ऐसा काम करते हैं, जैसे अभी याद है मैंने आपको पिछली बार कहा था, इफ यू ऑल रिमेंबर कि व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई टोल्ड यू कि जस्ट राइट डाउन, राइटिंग विल सॉल्व at least 80% of your problem. 80% of the problem is reduced while you write, ठीक है। In fact life में भी ऐसा होता है, if you can exactly write down what your problems are, you can just 80% of your problems are already solved, ठीक है। अगर आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पा रहे हो या आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो if you can just write down, clearly write down
what are the factors, why are you are not getting a job, then your problems will be solved. ठीक है, चलो philosophy पे नहीं जाते हैं. Let's come back to the question. So now I have to. So I'll tell at least 6. ठीक है, here, maybe here. ठीक है, यहाँ पे 6 black boxes and 6 white boxes. Indexes जरा लिख दो. Indexes, IDX. ठीक है, IDX. जरा कोई मेरे को बताएगा 6 ब्लैक बॉक्स और 6 व्हाइट बॉक्स के इंडेक्सेस. कोई भी 6 रैंडमली, कोई भी 6 ब्लैक बॉक्स ले लो. Randomly take any 6 black box, randomly take any 6 white box. Okay, just if you can just tell me the what you can tell me the answer, like indexes of black box and white box, then it would be easy for us. Okay, just can you tell me the randomly indexes for black box and white boxes? Random any 6. Let's suppose the first one, the black box are 0 0. Okay, any other black box, let's take this is 2 and 2. Any other random boxes here, 3 and 5, 3 and 5. Any other random boxes, this is 5 and 1, 5 and 1. Any other random boxes, this is suppose this was 6 and 6 and 6, 6 and 6, and any other last boxes, maybe right last one, 7 and 7. ठीक है, अब जरा किसी भी 6 व्हाइट बॉक्सेस का लेते हैं. द फर्स्ट वन 0 and 1, 0 and 1. Maybe the second one 1 and 2, 1 and 2. Maybe any other, this one 2 and 5, 2 and 5. ठीक है जी. Maybe any other one, maybe this one 5 and 2. No, 5 and 2 will be the reverse. So 5 and 4. This, see here, this one I'm saying 5 and 4. Five and 4. ठीक है जी. अगेन इस 6 वाले रो में ले लेते हैं 6 and I guess 6 and 5. This is 6 and 5. 6 and 5. And anyone in the last row, maybe the second last one, this one 7 and 6. 7 and 6. ठीक है. Now you have already solved 80% of your problem. 80% of your problem is already solved. ठीक है, don't worry about it. क्या, जरा इसको देखना. Now can you reduce a relationship? Now can you reduce a relationship between these? हाँ, आदर्श इसके बाद वही क्वेश्चन करेंगे. द लिस्ट इसके बाद वही लिस्ट पे है, क्वेश्चन वही लिस्ट पे है. यस अभिषेक, कंप्लीटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. अदर्स, आदर्श नहीं कहा, अदर्स कहा. अदर्स, क्या तुम्हें कोई रिलेशन दिख रहा है इसके बीच में?
क्या हो गया गाइस? व्हाट हैपेंड? शाद, कुणाल, यस, ध्यान से देखो, बहुत तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था. If you see in the black boxes, if you see in the black boxes, the summation for everyone, just sum it 0, 4, 8, 6, 12, 14. जरा सम इसको करना 1, 3, 7, 9, 11, 7, 6, 12, 13, 13. ठीक है? Here all these are even, I would say even, odd. ठीक है? So now with the indexes we can find out if their summation is even, then it is a black box. If their summation is odd, then it is a white box, isn't it? Yes or no? If that's clear. ठीक है जी, चलो आओ इसको कोड कर लेते हैं. Got it. The question name was all matrix sum. So row equal sc and dot next. Next int and column equal scn dot next int. ठीक है? For ठीक है. 3 लोगों ने कहा था, कुणाल एंड आदर्श. ठीक है. Kunal, see, after this we will be doing that question, rotate a matrix by 90 degree, and after that if we will be left with the time we will do spirally, or else we will be doing the spirally one in the class at the 10 p.m. ठीक है? After this, in the list of my questions, or like even some students said also previously that they want to do that rotate a matrix. Okay, so we'll be doing that one. After that, if we'll be left with time, we'll do. Else, we'll be doing it in the night. Okay. Okay. For int, is that okay, Kunal? And I equal for int I equal 0, I is less than row I plus plus. For and j equal 0, j is less than column j plus plus. ठीक है जी. अब अच्छा, मेरे को पहले एक एरे डिफाइन भी तो करना होगा. एंड arr, सॉरी, न्यू एंड. ठीक है जी. तो कॉलम, ठीक है, arr I
and J will be equal to, अब you can take input, I am take number, okay, number plus plus, मैं 10 बार input नहीं लेने जाने वाला, तो and number equal 1, number से मैं plus plus कर दे रहा हूँ, ठीक है. You can take input here also, you can also take ठीक है जी, बस हो गया. अब अपना काम आता है ब्लैक सम, व्हाइट सम का. तो int आंसर के लिए मैं BLAC के ब्लैक सम इक्वल इनिशियली 0, int W व्हाइट, अच्छा ये y लिखा गया, व्हाइट सम इक्वल 0, ठीक है. नाउ ओके, we will again reverse for int I equal 0, I is less than I equal 0, I is less than rho I plus plus, for and j equal 0, j is less than column j plus plus, ठीक है. अब देखो if इवन कैसे चेक होता है, if I plus j अगर इवन है मतलब कि मॉड्यूलो इट विल बी गिव मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0, ठीक है. मैं लिख देता हूँ, if sum of I and the EF index is even, ठीक है जी. Then BLA black sum plus equal ARR of I J, ठीक है. अगर नहीं है तो else white sum plus equal ARR of I and J, ठीक है जी. And last में you can just print now the answer. System dot out dot println black sum of black sum लिख देता हूँ, BLAC के black sum is black sum white sum, ठीक है जी. जरा इसको चला के देख लेते हैं. Java C all metric sum dot Java, Java all metric sum, मान लो मैं 5 का लेता हूँ, तो यही आंसर होगा, ठीक है. अब मैं इसको वेरीफाई नहीं करूंगा बैठ के, एक पूरा बना करके सम, द आंसर विल गिव सेम, ठीक है. इज दैट ओके विथ एवरीवन? ठीक है यार, नोट्स ले लो. इसके बाद वी विल बी डूइंग द 90 degree रोटेशन ऑफ इमेज, ठीक है, या मेट्रिक, ठीक है. और शॉर्ट ब्रेक, take notes, and of course that we will be doing. Here you are 6 people, I want all 6 back. Avirup, Abhishek, Adarsh, Kunal, Rupa, Shad, I want all of you back. Don't
leave the class. That is a very important question that we'll be discussing after this. ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ. So now calculate. Now see as last while. So ठीक है जी, चलो शॉर्ट 2 से 3 मिनट का ब्रेक. Yes, Kunal, please go ahead. अपन लाइन 12 में अपन ने इंटर नॉम इक्वल्स टू 1 करे, तो अपन उसको हम्म। यहाँ पे यूज कर रहे हैं 15 में ARRIJ इक्वल्स टू अपन नॉर्मली SC डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं, तो वहाँ पे नॉम प्लस प्लस कैसे वर्क कर रहा है? नहीं नहीं, यू कैन, तब आप अगर नहीं करते ना तो यहाँ पे नम नहीं लेते, वहाँ पे SCN डॉट नेक्स्ट इन लेते हैं. ये मैं बार हाँ. बार, अब देखो जैसे कि मैं अपना काम थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए किया, हम्म. समझ रहे हो कि अब मैं जा करके जैसे कि सपोज 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 कि ये इतना सा है, अब मेरे को ये बार बार इनपुट जा करके करना पड़ता, बस मैंने वो वाला ना अपना मेहनत बचाया और कुछ नहीं. ठीक है. तो यानी अपने को इनपुट नहीं करना पड़ेगा, वो एक एक नंबर बढ़ते आ हाँ, रहे हैं बस वहाँ पे. हाँ, अपने आप से बस एक एक नंबर वहां पे इनिशियलाइज कर देना. आप ना इसको SCN डॉट नेक्स्ट ऐसे भी लिख सकते थे. ठीक है, पर फिर आप इसमें यूजर अपने को से सारा input इनपुट लेना. करना पड़ता. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, ठीक. अभी अपना नंबर के साथ है.
Okay, guys. I hope everyone is done with the question. Let's move forward. ठीक है? Everyone done with this? अरे हाँ यार, आप कुछ तो बता दो. एक कुणाल रूपा, यू वांट टू से समथिंग कि ऑड नंबर्स. अरे यार देखो, अगर इवन नहीं हुआ, ये इवन का चेक किया ना, इफ इट इज इवन. अगर ये नहीं हुआ, इफ इट इज नॉट इवन, if not even, then for sure it will be odd, isn't it? By default है ना, if इसमें कंडीशन चेक लगाने की जरूरत नहीं. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रोटेट अ मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. बाय 90 डिग्री. ठीक है जी, तो लेट्स मेक अ मैट्रिक्स फर्स्ट. देखो, बनाऊंगा मैं कैरेक्टर का, और फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड व्हेन वी विल डूइंग दैट, ठीक है जी. ठीक है जी, तो लेट्स राइट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. ठीक है, देखो अपन ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बहुत ज्यादा आसान होगा. दैट्स व्हाई आई रिपीटेड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टुडे आल्सो. ठीक है जी, देखो 90 डिग्री से रोटेट करना है. ठीक है, तो लेट्स रोटेट इट विथ 90 डिग्री. ठीक है, तो ये रहा अपना 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, कुछ ऐसा हो गया. ठीक है, इजंट इट? 90 डिग्री से रोटेट करने पे यही बनेगा ना. अरे हाँ या ना तो बता दो, यही तो क्वेश्चन है. वी विल कीप द सेम फ्लो. फ्लो what of question, what of solution, what of solution, and how we are going to do that. ठीक है, ठीक है, ठीक है. बस 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 बस, बहुत बढ़िया. तो देखो, देखो क्या होगा, how we are going to do this. Very simple, very simple. पहले let's maybe I'll write it.
AFT here after 90-degree rotation. Now just ना थोड़ा सा अपने आंखों को और ज्यादा खोलो and just use your muscle memory. ठीक है? Very good, very good, very good, Adarsh. You're too smart. ठीक है, चलो बाकी सब देख लो तो क्या हो रहा है. देखो सिंपली इस मैट्रिक्स में अगर रिवर्स सॉरी रोटेट कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू रोटेट दिस मैट्रिक्स बाय तो इट विल बिकम दिस. सो व्हाट इज द रिलेशन दैट यू कैन डिराइव हियर? जस्ट टेल मी द रिलेशन. ओके फाइन आदर्श, वी विल कोड इट, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल कोड इट. ठीक है, जस्ट टेल मी व्हाट is the relation that you can see here? What is the relation that you can see here? First, the brute way, the brute force. See, this is a very important question. ठीक है, मतलब 5 to 7 lakh की कंपनीज जो होती है ना, all the 5 to 7 lakh companies, they frequently ask. Okay, I would not say कि all of them ask only, frequently ask. This is question. Rotate a image. This is also the question is by the name, also very famous. Rotate a 90-degree or image. Rotate a matrix by 90-degree or rotate a image. Image. ठीक है. This would be working on the same principle, the both. कभी कभी रोटेट अ मैट्रिक्स के नाम से नहीं आता है. ओह यार मैं क्या करूं, छोड़ो दोबारा लिख देता हूं. मैट्रिक्स बाय डिग्री और रोटेटिंग. ठीक है जी, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन. अरे देखो ना यार, ध्यान से देखो. व्हाट्स हैपेंड टू यू गाइस? सी दिस इज माय फर्स्ट रो. वेयर इट इज गोइंग? A B C D E, A B C D E. This is becoming my last column, isn't it? This is becoming my last column. Second row, F G H I J, F G H I J. This is becoming my second last column. This is my third row, P Q R S T. This will S P Q R S T. ठीक है. This is my third row, K L M N O, K L M N O. Isn't it my third last row? This is my fourth row. अभी मैं in terms of row, in terms of row, first row, last row. ठीक है, मैं सिर्फ 0th रो लिखता हूँ. ठीक है, 0th रो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है, अभी मैं ना इसका लिख रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं पहले आई वुड से कि किसी और कलर से, किसी और कलर में कौन से कलर को चूज करूं? दिस वन. 0th column, first column, second column, third column. ठीक है, this is column, this is row. अभी मैं सेम कलर से लिखता हूं कि ये एक्चुअली में कौन सा है. ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये 0th रो है. ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है. दिस इज रो ऑफ इनिशियल मैट्रिक्स. ठीक है जी, isn't this the row for of initial matrix, first row of initial matrix? अरे हाँ या ना, कुछ तो बताओ.
now you all understand why I always encourage कि draw the diagram. ठीक है, ये डायग्राम बनाने से ये दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है. So I am expecting someone from you to tell me the brute force way. Absolute brute force क्या होगा? Yes, Rupa, that's true. Kunal, that's optimized way. I'm asking the first absolute brute force. See, in interviews ना, देखो इंटरव्यू आपका फिक्स होता है. इंटरव्यू हैक करने का एक तरीका है. इंटरव्यूज आर एक्चुअली हैक. इंटरव्यू आपका 45 मिनट्स का फिक्स होता है. ठीक है, अब 45 मिनट्स के इंटरव्यू में अगर आप बंदे ने 3 क्वेश्चन लेकर आया होता है, 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आते हैं. ठीक है, in this if you'll just tell all the nice approaches of the first question, it seems like you have mugged up this question, मतलब like you have क्या कहते हैं उसको, तुम्हें ये क्वेश्चन याद था, मैंने ये क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है, you have just know the solution. It should be कि you should come with that solution. ठीक है, you should come to that solution in the interview process. Anyone? यार ब्रूट फोर्स तो बता दो, ये मत करो. Okay. Abhishek, you have also told me that you are also telling the optimized way. ठीक है, देखो तुम्हारा आंसर सही है और तुम्हारा आंसर सबसे बेस्ट. ठीक है, मैं अभी सबसे घटिया वाला आंसर पूछ रहा था, तो मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बस आई वाज आस्किंग. ठीक है, शायद नहीं शायद. हाँ ठीक है, शायद आपका सही है. देखो मैं ना ऊपर से बताता हूँ. हाँ बिल्कुल सही देखो. अरे ठीक है. देखो यू नीड टू राइट अ फंक्शन. ठीक है, यू नीड टू राइट अ फंक्शन. बस इसको फिगर आउट करना, दैट विल बी योर होमवर्क. द वर्स्ट अप्रोच का. ठीक है, द वर्स्ट अप्रोच दैट इज in that you have to write a function. In that function what you have to do is you will get a row. ठीक है, एक array मिलेगा, and again the first is brute force way. Take a new array. ठीक है, not array, take a new matrix. ठीक है जी, एक नया मैट्रिक्स ले लो. ठीक है, एक नया मैट्रिक्स ले लो. In that what will happen is, ध्यान से देखो, ये पहला रो है, तो मैं इस पहले रो को उठाऊंगा और उसके आखिरी रो में डाल दूंगा, आखिरी कॉलम में डाल दूंगा. What I'll speak in English also.
excuse me, what I'll do is I'll take this as the first row, and then I'll put it in the last column. ठीक है? I'll take the second row and put it in the second last column. Simple, बस इतना ही है. I have to make a function for that. ठीक है? कि मैं एक रो में एंट्री दे रहा हूँ, तो ये कॉलम, that will be your homework. You have to figure it out. ठीक है? In the next class, like in the night class that we'll be having, for the first 10 minutes or maybe for the first 5 minutes, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. We'll discuss कि देखते हैं कौन करके आ पाता है. ठीक है? You have to do that. ठीक है? ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, तो इट विल बी लाइक ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वाला ही सेम होगा काम है यहाँ पे. उसमें क्या करना होता था, उसमें फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम बनाना होता था, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम बनाना होता था. बस इसमें फर्स्ट रो को उठा के उसको लास्ट कॉलम बनाना होगा, सेकंड रो को उठा के सेकंड लास्ट कॉलम बनाना होगा. दैट्स द हैक ओनली गाइस, दैट्स द हैक. ठीक है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अब आते हैं टेक अ न्यू मैट्रिक्स. इसमें कर देंगे मेक अ फंक्शन which takes row, which prints prints all the elements of a row in the all the row in another column in different the column in required column in required column as stated in the as stated. ठीक है? जिस कॉलम में बोलूंगा उसमें वो कर देगा in stated in different matrix. ठीक है जी, that will be one. ठीक है? Then इसके हो जाने के बाद then you have to recopy, copy all the recopy the matrix, the transform matrix, recopy the rotated matrix, rotated matrix, recopy the rotated matrix into the original matrix. In the original matrix. ठीक है? बस हो गया. तो इसका जरा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते हैं. ये अप्रोच ना इतना घटिया अप्रोच है क्यों एक्चुअली. PLEXI कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है जी. तो पहले इसका टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं. पहले स्पेस देख लेते हैं. स्पेस, क्योंकि स्पेस एक ही है. It will take O of n into m extra space. Extra space for storing rotated matrix. ठीक है? टाइम का डिस्कशन कर लेते हैं. What will be the time? O of n, पहला O of n into m, forming the rotated matrix, ठीक है? फिर O of n into m extra, time for recopy element. ठीक है जी. अब आते हैं इसका ऑप्टिमाइज तरीका, देखते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज तरीका क्या है.
ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ठीक है जी, देखो जरा ध्यान से देखो, अभी ना इस कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, कीप इट इन द साइड। एक बार इसका ट्रांसपोज लेना, जरा इसका एक बार ना ट्रांसपोज लेके देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आता है। ठीक है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो फटाफट फटाफट लाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले, दैट वुड हेल्प मी टेकिंग द ट्रांसपोज। ठीक है, और अभी के लिए ना, अभी के लिए इसको एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, दिस वाज बेसिकली अ स्क्वायर, 1 2 3 4, तो ये वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी ये वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स टेक द ट्रांसफॉर्मर्स। जरा इसका जल्दी से ट्रांसपोज बताना बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है जी, ए यहाँ पर होगा एफ, यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे होगा के, यहाँ पे होगा सी, यहाँ पे होगा पी, यहाँ पे होगा डी, यहाँ पे होगा एच, यहाँ पे होगा एल, यहाँ पे होगा क्यू, यहाँ पे होगा आई। ठीक है जी, पे क्यू एन आई, यहाँ पे आर, यहाँ पे एन। ठीक है जी, अब बस बस बस, अब तो हो गया सारा खेल खत्म। अब इसको दोबारा यहाँ लेकर आते हैं, एंड नाउ अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, क्योंकि देखो हम ट्रांसपोज क्यों किए, व्हाई डिड वी ट्रांसपोज, बिकॉज अर्लियर इन द क्वेश्चन वी फाउंड कि हम ना, अगर मेरे को फर्स्ट ऑर्डर में लाना था, मैं इसको ट्रांसपोज करके इसको फर्स्ट में ला देता था। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को जरा रीड करो। ये बेसिकली अब ना ये पूरा मैट्रिक्स देखो सेम है एक तरीके का, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम ही है, ए जे के एल, ए जे के एल, isn't it? The elements in the first row and in this first row are the same. They are just in reverse order. The elements in the second row, elements in the second row are same, are exactly same. ठीक है, but they are just in the reverse order, just in the reverse order. Here elements in the first row, elements in the in the third row and in the third row are same, just reverse order. Here the elements are same, the elements are exactly same, but they are in the reverse order, isn't it? अगर ये रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है जी, अगर ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो मैं अगर ट्रांसपोज करने के बाद इसके सिर्फ सारे रो को रिवर्स कर दूं तो ये वाला मेरे को नहीं बन जाएगा आंसर? जस्ट टेल मी दैट, कैन आई नॉट फॉर्म others? What happened? Kunal, Aviroop, Rupa, we can do that. बस अब मेरे को जा करके क्या करना होगा, तो ठीक है एक काम करते हैं, अभी ना टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, इट्स बीन 3 hours वी आर कंटिन्यूअसली स्टडीइंग एंड आई हैव अ क्लास आफ्टर दिस आल्सो, सो राइट नाउ आई विल राइट द स्यूडो कोड। ठीक है, स्यूडो कोड
एंड देन इन द नाइट क्लास फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स मे बी, और इन द 15 मिनट, ज्यादा नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, इसको कोड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो स्यूडो कोड इसका लिख देते हैं। फर्स्ट 2 लाइन का कोड है, 2 फंक्शन बनाने हैं। फर्स्ट TRANSPOS ट्रांसपोज द, first transpose the matrix, ठीक है। if we transpose the matrix, this will become this one, then just reverse each row, yeah, let's say reverse each row of the transposed matrix, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स करो, और उसके बाद जो रो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, ठीक है। और इसमें अब इसमें एक और चीज बच रहा है, वो भी साथ साथ देखी चलते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू डू। देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। टाइम, क्या आप मैं पूरे काम करने में कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा हूं? एम आई टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस लाइक स्पेस इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स और रिकर्शन और एनीथिंग? नो एक्स्ट्रा स्पेस, नो एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। टाइम लगेगा, स्पेस का कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं लिखता हूं, टाइम लिखता हूं, अगर टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी लिखता हूं, तो टाइम में मैं ले रहा हूं क्या? पहला O ऑफ n इंटू m का टाइम लूंगा, ठीक है। O ऑफ n इंटू m का टाइम लूंगा किसके लिए? ट्रांसपोजिंग के लिए, ट्रांसपोजिंग के लिए, ठीक है। और O ऑफ n इंटू m का टाइम लूंगा किसके लिए? रिवर्सिंग, REVERSING, रिवर्सिंग each row of the matrix, of the transposed matrix, of the transposed matrix, ठीक है जी। अगर O ऑफ n इंटू m का है, ट्रांसपोजिंग करने में O ऑफ n की टाइम लगेगी, तो बस, तो मेरा टोटल टाइम कितना लगेगा? 2 ऑफ O ऑफ n इंटू m, ठीक है। ये मेरा टोटल टाइम लगेगा। इन दिस वे आई कैन जस्ट डू दिस टास्क, isn't it? Yes or no? अरे हाँ या ना, कुछ तो बता दो, नहीं समझ में आया तो वही बता दो। ठीक है जी, ठीक है, चलो, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। रूपा, आपको फॉर ईच लूप पढ़ना था ना? फॉर ईच लूप समझ में नहीं आया था, तो ठीक है, ठीक है यार, देख लो फॉर ईच लूप में क्या होता है। सर फंक्शन, कौन सा फंक्शन कुणाल? कुणाल कौन से फंक्शन के लिए कह रहे हो? वर्किंग ऑफ द फंक्शन, working of the function. Kunal and Rupa, are you all going to come in the today night class? Kunal, तुम आओगे क्लास में? ठीक है, तो उस वक्त ना शुरू के 10, जब बच्चे आ रहे होते हैं, जब वेटिंग टाइम होता है ना, ज्वाइन कर लेना, बता दूंगा। आई हैव गॉट अ मीटिंग लाइक कोड ऑफ व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, चेक कर लोगे? हाँ ठीक है यार, चलो कोई नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं करूंगा, बट ले लो कोई भी, नाइस, ठीक है। नंबर शेयर कर दिया है, और नॉट एक्चुअली कुणाल, सिर्फ तुम्हें ही किया है पर्सनली, मैं सभी को कर देता हूँ, एवरीवन इन द मीटिंग।
इफ यू नीड, बट कोड वर्ड मत भेजना, कोड डिबग नहीं करूंगा। बाकी इफ यू ऑल हैव एनी प्रॉब्लम, फेसिंग ए प्रॉब्लम, प्लीज इन्फॉर्म अर्ली। यस अभिषेक, कल से मैं आपके ग्रुप में ऐड हो चुका हूँ, तो आई विल इन्फॉर्म अर्लियर। ठीक है जी, ठीक है यार, चलो बाय बाय, बाय बाय, सी यू ऑल एट 10 PM।